तो कल के लेक्चर में हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। तो अभी आज के लेक्चर में हम उसी के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ओके, देखो ठीक से ये MCQs। So first of all, we'll see the second question. Read this question number 2, which simply tells us that given that the CP minus CB is equal to R, capital R, and also gamma is equal to capital CP upon capital CB. Okay, where CP is the molar specific at constant pressure and CB is the molar specific at constant volume. Then what is this CV equal to? Can you give the answer orally? B option. Very good, very good, very good. B option, क्योंकि हमने कल ही देखा था ये फॉर्मूला, याद है ना? तो CV can be proved to be equal to R upon gamma minus 1. बिल्कुल, चलो ठीक है। So see the next one. अच्छा, ये नेक्स्ट तो बहुत इजी है। वेलोसिटीज दिए हैं तीन मॉलिक्यूल्स के 5, 6 और 7 मीटर पर सेकेंड। देन देयर मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज, सिंपली वी हैव द फॉर्मूला फॉर दैट, दैट इज C actually equal to C square is actually equal to root of C1 square plus C2 square plus C3 square, right? And hence we get this upon n. अच्छा, एक्चुअली C स्क्वायर नहीं है, ये C है एक्चुअली। और अगर हमको C स्क्वायर चाहिए तो फिर क्या करना पड़ेगा? रूट हटाना पड़ेगा बस। सो जस्ट रूट को हटा दो तो C स्क्वायर हमको क्या मिलेगा? 3 का स्क्वायर नहीं, सॉरी 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 प्लस 36 प्लस 49 एंड डिवाइड बाय 3। दैट्स इट। ये सॉल्व करो फटाफट। दैट इज द आंसर। 74 प्लस 36 कितना होता है? 110। तो 110 अपॉन 3 कितना बनता है? It simply is 36.7. This is called as the RMS velocity, sorry, mean square velocity. Okay, and if you want to find out the RMS velocity, वैसे तो यहाँ पे mean square velocity पूछा है, but अगर हमको root mean square velocity चाहिए तो इसका simply square root लेने का, तो सब खत्म। तो वो बन जाएगा 6 point something, so approximately 6 only. So okay, fourth वाला देखो, by what percent should the pressure of given mass of the gas is to be increased so as to decrease its volume by 20% at constant temperature? Okay, तो constant temperature का मतलब क्या हुआ? हमको Boyle's law यूज करना है, right? तो क्या कहता है Boyle's law? PV is equal to constant. Okay, तो P into V is going to be equal to constant. And अभी हमको करना क्या है यहाँ पे? Decrease the volume by 20%. तो वॉल्यूम हैज टू बी डिक्रीज बाय 20%। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे कि P1 into V1 is equal to P2 into V2, but it's given that V2 मतलब फाइनल वॉल्यूम is 20% लेस देन इनिशियल वॉल्यूम, मतलब V1 minus 20% ऑफ V1। ये हो गया V2 का वैल्यू। तो इससे हमको मिलता है V2 should be equal to V1 minus 20% मतलब 20/100 into V1, जो बनता है V1 कॉमन 1 minus 20/100 into V1, मतलब ही V2 बनता है एक्चुअली, देखो 100 minus 20 कितना बन रहा है? 80, बराबर। तो ये बन गया 80/100 into V1, करेक्ट है? मतलब ये 80%। अब सीधी बात है, अगर 20% कम होने वाला है तो इसका मतलब वो 80% बनने वाला है। तो ये तो है ना 80% का मतलब, ठीक है? तो इसका मतलब V2 इन शॉर्ट
is V2 is going to be actually equal to 4/5 times of V1. समझा कैसे? 20 से reduce किया इसको, 24 जा 25 जा. Okay. तो V2 और V1 के बीच में relationship तो हमको मिल गया. If we put this value of V2 here in this equation, then we get that P1 into V1 is equal to 4/5 into P2 into 4/5 into V1, right? V1 cancel from both sides. And if we transfer this 4/5 in that side, then we can get that 5/4 into P1 is equal to P2. मतलब ही क्या कि P2 is actually going to be 5/4 times of P1. Okay, but 5/4 का मतलब क्या? इसको अगर हमको इसमें परसेंटेज में अगर एक्सप्रेस करना है तो उसको क्या करने का, 100 से मल्टीप्लाई करने का, तो वो बन जाएगा परसेंटेज में, तो into 100 and that is going to be in percentage. Okay, so P2 is actually going to be, अब देखो 4 1s are 4, 25 are 25, 5s are 125, so it becomes 125% of P1. That means P2 must be 125% of P1, which can also be written as P2 is equal to P1 plus 25% of P1. समझा कैसे? क्योंकि 125% का मतलब क्या होता है? 125 मतलब 100 प्लस 25 है कि नहीं? तो 100% तो वो पहले ही था ऑलरेडी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको 25% से बढ़ाना पड़ेगा. तो व्हाट इज द क्वेश्चन? By what percentage should the pressure of the given mass of the gas must be increased so that its volume decreases by 20%? So what is the answer? 25%. ठीक है? ओके, अभी कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो रेडिएशंस के भी है और थर्मोडायनेमिक्स के भी मिक्स्ड है इसमें. So we'll just focus on the questions based on the topics which we have covered last time. ओके, ये बात याद देखो यहाँ पे ठीक से 7th वाला क्वेश्चन एक बार ये हमने किया था, याद होगा आपको. What is the ratio of the RMS velocity of air molecules at STP to the velocity of sound in air at STP? कितना आएगा बताओ? देखो RMS velocity के लिए फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ 3p अपॉन रो, जो कि हमने ऑलरेडी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिस पे प्रूव किया है. एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट एसटीपी हियर? साउंड का वेलोसिटी कितना होता है? उसके लिए लैप्लास करेक्शन याद है ना? लैप्लास करेक्शन टू द न्यूटन्स फॉर्मूला व्हिच इज रूट ऑफ गामा p अपॉन रो. ओके, तो अगर हमने ये रेशियो लिया तो हमको मिलेगा c अपॉन v व्हिच इज गोइंग टू बी इक्वल टू रूट ऑफ, अभी इसमें का p बाय रो और p बाय रो कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा और रूट के अंदर ऊपर में बचेगा 3 और नीचे बचेगा गामा. ओके, बट अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि हमको गामा का जो वैल्यू है वो एयर के लिए कितना है पता नहीं है कि नहीं, बट इतना, अच्छा ये एक्चुअली दिया हुआ तो है वैसे, बट स्टिल वी कैन फाइंड इट आउट इवन इफ इट इज नॉट गिवन. देखो कैसे, क्योंकि हमको पता है एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन है, बराबर है, और ऑलमोस्ट 16 to 20% ऑक्सीजन है, और ये दोनों डायटोमिक है, बराबर, एंड वो भी बहुत छोटे हैं, मतलब दे आर ऑफ वेरी स्मॉल साइज, सो वी कैन कंसीडर देम लाइक डंबल. ठीक है, तो डंबल शेप होने की वजह से उनको हम रिजिड और नॉन वाइब्रेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल की तरह कंसीडर कर सकते हैं, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 5. और डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होने की वजह से उसका जो CV का वैल्यू जो है तो वो बनता है सिंपली 5/2R. याद है ये सब? and because of that CP का वैल्यू जो बनता है वो है 7/2R, correct? and because of that this gamma actually becomes 7/5. if we divide this 7/2R by 5/2R, then this RR gets cancelled, 2 also gets cancelled, and we are left with 7/5, which comes out to be approximately 1.4, which is already given here. But here I am telling that even if it is not given, we can just find it out easily. Yes, then we can say C by V is actually going to be 3 divided by 1.4. So 1.4 is very close to 1.5, right? And hence 3 divided by 1.5.
3 का आधा ही तो होता है ना 1.5, तो इसलिए अगर ये हम करेंगे रेशियो तो वो एक्चुअली 2 के आसपास आएगा, 2 से थोड़ा ज्यादा आएगा। और जैसा कि हमको पता है ऑलरेडी कि √2 का ही वैल्यू 1.414 है, तो इसलिए √2.1 का वैल्यू कितना आएगा, थोड़ा 1.4 से ज्यादा आएगा, और क्या आ सकता है। तो अभी 1.414 से ज्यादा तो तीन तीन वैल्यू दिख रहे हैं, ये भी है ये भी है, ठीक है। तो इसका मतलब हमको ये जो रेशियो है वो भी ठीक से ढूंढना पड़ेगा, और उसका स्क्वायर रूट भी प्रॉपर हमको निकालना पड़ेगा। इट्स ओके, वी कैन डू इट। सी, अगर 1.4 से इस 3 को डिवाइड करो तो कितना बनता है, देखो सिंपली इट विल बी 30/14, करेक्ट है, ये हमको निकालना है। सो अकॉर्डिंगली इट विल बी 14, अच्छा इसको 2 से डिवाइड करेंगे ना तो बनेगा 2 15 जा, एंड दिस विल बी 2 7 जा, सो इट विल बी एक्चुअली 15/7। तो 7 को अगर डिवाइड करते हो, 7 से अगर 15 को डिवाइड करते हो तो 7 2 जा 14, 1 बचा 10 हो गया, 7 1 जा 30, 3 बचा 30 हो गया, तो 7 4 जा, and then it's okay, 2 will be there. Okay, we can now we can find out the square root of this. How to find the square root of this 2.141142? तो उसके लिए वही वाला हमारा जो मेथड है तो वो यूज कर सकते हैं आराम से, जो डिवीजन मेथड होता है कि नहीं स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। सो उसमें 2.142 यहाँ पे 0 आ गया, दो दो का ग्रुप बनाना होता है कि नहीं दोनों तरफ, तो ये बन गया 2 का ग्रुप, ये बन गया 2 का ग्रुप, और एक अकेला 2 एज इट इज, ठीक है। तो फिर अभी इस 2 के पहले वाला नंबर कौन सा है जिसका स्क्वायर इससे कम हो, 2 से कम हो, तो 1, तो इसलिए यहाँ पे आएगा 1, इधर 1, इधर 1 और इधर 1, जिससे वो बनेगा 1 यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे एडिशन करने का तो वो बनेगा 2, और ऊपर का ग्रुप अगर ले लेंगे नीचे तो बन गया 14, बट पॉइंट उसके लिए क्रॉस हो गया तो पॉइंट उठा के ऊपर दे दिया। फिर यहाँ पे आएगा 2 के ऊपर हमको ऐसा एक नंबर रखना है जिससे हमको जिसको इससे उसको मल्टीप्लाई करने के बाद इससे थोड़ा कम आंसर मिले। अगर 21 इंटू 1 करेंगे, 22 इंटू 2, 23 इंटू 3, 24 इंटू 4, इट्स ओके, 24 इंटू 4 मस्ट बी देयर, विच इज 96 हियर। ओके, दैट मीन्स हियर इट विल बी 4, तो 1.4 तो मिल रहा है नो डाउट। अभी इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करो तो मिलता है 18, और यहाँ पे आ जाता है 28। ओके, अभी ऊपर का ग्रुप जो बन रहा है वो है 20 का, तो वो 20 हम यहाँ पे लेके आएंगे, और अभी नेक्स्ट नंबर ही हमको सिर्फ चाहिए। 1.4 तो फिक्स्ड है, बट इसके बाद जो है वो 6 आने वाला है या 8 आने वाला है, उसके ऊपर ऑप्शन हमको मिलेगा उसके हिसाब से। चलो, तो अभी यहाँ पे 1.4 तो मिल गया है अभी। सो 28 के ऊपर क्या रखेंगे, अगर सपोज 6 रखा तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 300 को भी 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1800 आ जाता है, तो ये थोड़ा सा कम आएगा, मतलब 6 ही आएगा यहाँ पे, करेक्ट है। तो इसलिए 1.46 मस्ट बी द करेक्ट ऑप्शन हियर, नॉट 1.48। 8 अगर डालेंगे तो फिर वो तो बहुत ऊपर जाएगा। यस, नेक्स्ट वन, 1 mole of an ideal diatomic gas undergoes transmission from A to B along the path AB as shown in the figure. Here you go. This is the path A to B. Okay. The change in internal energy of the gas during this transition is, how we can get that? We want to find out the change in internal energy of the gas. See here, this is the pressure volume graph, which starts from the point A here and ends up to the point B here. Okay, this is a graph, and it's given that this point is 4, this point is 6, this point here is 5, and here it is 2. Okay, and this is in kilopascal. Pressure is going to be in kilopascal and volume is in meter cube.
so it's okay. Meter cube is a standard unit, but kilopascal is not a standard unit. So kilo has to be converted into by multiplying it by 10 raised to 3 into Pascal. Okay, but what we want to find out is we want to find out the change in internal energy of the gas during this transition. Okay, so just read the question carefully. 1 mole of ideal diatomic gas undergoes this transition from A to B along the path AB. Okay. Okay, so one मेथड, एक सिंपल सा तरीका ये होगा कि आइडियल डायटोमिक गैस बोला हुआ है, राइट? डायटोमिक गैस का सीवी का वैल्यू कितना होता है? डायटोमिक गैस के लिए सीवी होता है, अभी अभी हमने देखा 5/2 इंटू आर टी, सॉरी 5/2 इंटू आर, बराबर है। और अगर ये सीवी है तो इससे हमको चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल जाता है उसका, दैट इज सीवी इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू n times of cv into dt. But again here is that the change in temperature is not given, so we can just try to find it out by using the ideal gas equation. देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है? PV is equal to nRT. So if we use this ideal gas equation at this point A here, then we can get that P1 V1 is going to be equal to nRT1, करेक्ट है? इससे हमको T1 मिलेगा. What will be T1? It will be simply P1 V1 upon nR, right? So that we get this T1 is equal to P कितना है? P1 कितना है? देखो इधर इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वही P1 V1 रहने वाले हैं, तो वो रहेगा 5 किलो पास्कल और V1 is 4 मीटर क्यूब. तो but don't forget to multiply this 5 by 10 raised to 3 because it's in kilo pascal. Okay, so it becomes 5000. So 5000 multiplied by 4. Okay, this is P1 V1, that is to be divided by n. n मतलब क्या? Number of moles, which is going to be 1 simply, and that is multiplied by r, which is kept as it is. रखो उसको वैसे ही, वो बाद में cancel भी हो जाएगा actually. So T1 is actually going to be 5000 into 4, मतलब कितना? 5 4s are 20,000, right? So it's going to be 20,000 upon r. Okay, in the same way we can find out T2 also, that is the temperature of the gas at point B here. उसके लिए हमको इसके कोऑर्डिनेट्स लगेंगे जो है 2 और 6, बराबर? तो वो P2 V2 है, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला बनेगा P2 V2 अपॉन n into r, so that we get, जब P2 कितना है यहाँ पे 2 किलो पास्कल, मतलब 2000 पास्कल हो गया, into 6 कितना बनता है वो? 2000 into 6 becomes 12,000, right? So it's 12,000 upon r again, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो फिर भी 1 ही है ना, ठीक है? तो अब यहाँ पे अगर हम ये यूज करेंगे यहाँ पे, तो डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी बनता है n which is 1 into cv जो बनता है 5/2 r, okay, into dt, that means it is going to be T2 minus T1, where T2 is actually 12,000 upon r minus this T1, which is actually going to be 20,000 into r upon r. Okay, so r can be taken common once in the denominator, and that can be cancelled with this r here, right? So as to left with देखो अभी क्या मिलेगा हमको, तो वो है 5/2 इंटू r कैंसिल हो गया, और 12,000 माइनस 20,000 कितना बनता है? -8,000, बराबर? तो ये 2 1s एंड 2 4s,
So it becomes 4,000, and 4,000 multiplied by 5 comes out to be 20,000. So 20,000 joule, which has to be written as minus of 20 kilojoule. Okay, why this minus sign is there? Because 12,000 is less than 20,000. Okay, so temperature actually has been डिक्रीज्ड, बराबर है ना। यहाँ पे पहले 20,000 अपॉन आर इतना टेम्परेचर था और बाद में 12,000 अपॉन आर इतना टेम्परेचर बन गया, मतलब जरूर टेम्परेचर तो डिक्रीज ही हुआ है कि नहीं। तो टेम्परेचर डिक्रीज होने से क्या होता है, इंटरनल एनर्जी लॉस होता है, इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी माइनस ऑफ 20 किलो जूल। ओके, read this 11th one. 1 kilogram of diatomic gas is at a pressure of 8 into 10 raised to 4 Newton per meter square, right? The density of the gas is 4 kilogram per meter cube. So okay, what is the energy of the gas due to its thermal motion? मतलब हमको टोटल एनर्जी निकालना है ना, टोटल इंटरनल एनर्जी, और वो भी डायटोमिक गैस है, याद रखो ठीक से, डायटोमिक गैस। So what is the diatomic gas, CV of diatomic gas? CV is of diatomic gas is 5/2 R, correct है? So we have to use this to find out the total energy of a diatomic gas, which has to be U is equal to 5/2 into, ये तो चलो ठीक है, पहले उसको लिखेंगे N इंटू CV इंटू कैपिटल T। ये फॉर्मूला बनता है टोटल इंटरनल एनर्जी ड्यू टू थर्मल मोशन, ओके, which can be written as N into 5/2 R into T. That means it becomes actually 5/2 into nRT, correct है? Yes, so then we can just put these values here, but number of moles हमको पता है कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं, बट इतना पता है कि इट्स 1 किलोग्राम, ओके, और प्रेशर भी पता है और डेंसिटी भी पता है। हाउ कैन वी मेक यूज ऑफ दिस टू फैक्ट्स हियर? ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम एक्सप्रेस करेंगे यहाँ पे मास अपॉन मोलर मास, करेक्ट है? सो दिस इज m अपॉन m नॉट एंड इनटू RT एज इट इज, यस। बट अभी यहाँ पे नहीं, तो ऐसा करें, nRT को प्रेशर एक्सप्रेस करना चाहिए था हमको, यस। nRT कैन बी एक्सप्रेस्ड एज PV, PV इक्वल टू nRT जो होता है ना आइडियल गैस इक्वेशन, सो इससे हमको PV मिलेगा, so it will be 5/2 PV, okay, so you can be written to be equal to 5/2 times of PV, but V as we know that volume, क्योंकि देखो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम हुआ करता है, राइट? तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू व्हाट, मास अपॉन डेंसिटी, दैट्स इट। सो वॉल्यूम को हमको सिंपली रिप्लेस करना है मास अपॉन डेंसिटी से, एंड दैट्स ऑल, एंड जस्ट पुट द वैल्यूज हियर एंड गेट द आंसर। तो प्रेशर कितना दिया है, ये देखो, pressure is given to be 8 into 10 raised to 4, बराबर? So just put it here, 8 into 10 raised to 4, and mass कितना दिया है देखो, 1 kilogram, right? And density is already given to be 4 kilogram per meter cube, okay, so here it is 4, yes. So just 2 4s are 8, and that 8 will get cancelled with this 8 here, and here 5 into 10 raised to 4 will be the final answer in joule. So it's going to be 5 into 10 raised to 4 joule. Okay. Yes, to this 13th one. At what temperature will the RMS velocity of hydrogen molecules is same as that for oxygen molecules at 127 degree? Okay. We have to find out the temperature at which the RMS velocity of hydrogen molecules is same as RMS velocity of oxygen molecules at 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अच्छा देखो, आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है टेम्परेचर के हिसाब से, इट इज एक्चुअली रूट ऑफ 3RT अपॉन m नॉट, बराबर है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स in terms of temperature. This is the absolute temperature here, okay. So then
we can just equate the RMS velocity for hydrogen molecule and oxygen molecule. What is the formula for hydrogen molecule's RMS velocity? CH, we can say it will be root of 3 RTH upon MH. Okay. And what is the RMS velocity of oxygen molecules? It's again going to be root of 3 RTO upon MO, where MO is the molar mass of oxygen and MH is the molar mass of hydrogen. And TH is the temperature at which hydrogen is kept and TO is the temperature at oxygen is kept. But we are given that this RMS velocity are equal. So CH must be equal to CO. देखो यहाँ पे सेम बोला है कि नहीं उन्होंने, तो इसलिए फिर यहाँ पे CH इक्वल टू CO को हमको करना पड़ेगा. तो अगर करेंगे तो वो हमको मिलेगा रूट ऑफ 3RTH अपॉन MH has to be equal to root of 3RTO upon MO. So that root gets cancelled, 3R gets cancelled, and what we are left with is simply TH upon MH is equal to TO upon MO. बराबर. तो इसमें से TH तो हमको निकालना है. So just take this MH in that side and get that MH upon MO into TO, where MH is nothing but the molar mass of hydrogen, which has to be 2, and MO is nothing but the molar mass of oxygen, which is to be 32, and that is to be multiplied with temperature of oxygen gas. It's given to be 120 degrees Celsius, but don't forget to convert it into radian. So 127 degrees Celsius matlab 400 radian, sorry, 400 Kelvin, sorry. So it's going to be 400 Kelvin. So इसको अगर हम reduce करेंगे तो 2 1s are 2 16s are and 16 1s are 16 25s are. Remember this, 16 25s are 400. So we get that TH is equal to 25 Kelvin. But again convert it into Celsius temperature because there is no option like 25 Kelvin. Okay. Don't think that this 25 is very close to 27 and mark that option correct as a correct one. No, it has to be converted into Celsius क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आपको मिला है वो केल्विन टेम्परेचर है. तो 25 डिग्री केल्विन मतलब कितना हो गया वो? So we have to convert it into Celsius by subtracting 273 from it. तो 273 में से 25 subtract करेंगे तो कितना आएगा? It must be 248 degrees Celsius, and that is also negative. So minus 248 degrees Celsius will be the temperature of the hydrogen gas, so that its RMS velocity becomes exactly equal to the RMS velocity of oxygen molecules at 120 degrees Celsius temperature. Okay. What about this? According to the kinetic theory of gases, at a given temperature, lighter molecules will have less average kinetic energy. Lighter molecules will have more average kinetic energy, or all molecules have same kinetic energy. देखो, at a given temperature अगर हमको पता है तो इससे हमको ये पता चलता है कि ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया है कि the kinetic energy of a molecule, okay, per molecule of a gas is always equal to 3/2 into kb into T. याद है? Where kb is going to be the Boltzmann's constant, which is the ratio of R to N0, where R is a universal gas constant and N0 is again the Avogadro's number, which is a universal constant only. So both of these are universal constants. So kb must be the universal constant. 3/2 is already constant and temperature is also constant. So what we can say is, if a temperature is constant, then the average kinetic energy of the all molecules, okay, will be the constant. Actually, it doesn't matter lighter molecules or heavier molecules. Okay, so kinetic energy just depends on the temperature only. Okay, it doesn't depend on the size or mass of the single molecule here. एक मॉलिक्यूल कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा, कितना भी हेवी या हल्का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है. ठीक है ना? गिवन टेम्परेचर अगर है तो उस केस में RMS, the kinetic energy, average kinetic energy is going to be the constant one.
Yes. Next one. A gaseous mixture consists of 16 gram of helium and 16 gram of oxygen. The ratio of Cp to Cv of the mixture is. Okay. ये हमने कल देखा था, देखो यही है फॉर्मूला वो जो हमने कल प्रूव किया था, याद होगा सभी को. The adiabatic constant of gamma of the mixture of two gases. If you want to find out the, if suppose first gas n1 moles of first gas and n2 moles of second type of gas is mixed together, then whatever mixture is formed will contain n1 plus n2 moles, no doubt, but it will have some adiabatic constant gamma, which is given by the formula n1 plus n2 upon gamma minus 1 is equal to n1 upon gamma 1 minus 1 plus n2 upon gamma 2 minus 1. Correct hai? Yes. So if you use this formula here, then we can get n1. What is n1 here? See, 16 gram of helium. मतलब कितना? Can you find out n1 here? Number of moles equal to क्या होता है? Mass upon molar mass. Correct है? So mass is given to be 16 gram. And what is the molar mass of helium? Helium का molar mass होता है 4. याद रखो ठीक से. So 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 4. ठीक है. And what about N2 here? N2 देखो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन बोला है ना यहाँ पे, तो मोलर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास. तो मास इज 16 ग्राम, नो डाउट. बट व्हाट इज द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन? It's 32, remember. So it will be 1 by 2 here. Yes. So N1 N2 मिल गया. What about gamma 1 and gamma 2 here? See, note one thing here, that helium is a monoatomic gas molecule. ये तो पता है सभी को. Helium is going to be the monoatomic gas molecule, which consists of only one atom. In a molecule तो form करता ही नहीं ना वो, He2 तो कभी होता ही नहीं है. Helium always appears in the monoatomic state, and that's why its gamma has to be 5 by 3. We have learned the values of gamma for monatomic gas, diatomic gas and diatomic vibrating gas. याद है ना? तो मोनोएटॉमिक के लिए होता है 5 by 3. डायटोमिक के नॉन वाइब्रेटिंग के लिए कितना होता है? 7 by 5, जो अभी मैंने देखा था. और डायटोमिक वाइब्रेटिंग के लिए कितना होता है? 9 by 7. तो ये सब वैल्यूज याद रखो ठीक से. सो गामा 2 इज एक्चुअली गोइंग टू बी 7 by 5, because oxygen in this case here is nothing but the diatomic gas actually. तो डायटोमिक होने की वजह से उसका जो गामा का वैल्यू है वो 7 by 5 हमको मिलेगा. And it is not a vibrating diatomic actually. It is non-vibrating diatomic because its atomic number or atomic number is less than 30. Almost जो 30 से छोटे होते हैं, 30 से less than जिनका atomic number होता है, तो वो सारे जो ये है गैसेस है, तो वो डायटोमिक होने के बाद भी नॉन वाइब्रेटिंग ही रहते हैं एक बहुत बड़ी रेंज ऑफ टेम्परेचर के ऊपर. हाँ, बहुत ज्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो उसके अंदर ये चांसेस है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ लोअर एटॉमिक मास आल्सो विल बिकम वाइब्रेटिंग, बट मोस्टली जनरली द स्मॉलर एटॉमिक नंबर मासेस gases are always non-vibrating. So we have to take it as non-vibrating, and that's why gamma 2 is going to be 7 by 5. Correct है? चलो ठीक है. So if we use all these values here in this formula, then we can be able to get that n1, which is 4, right? So this is 4 plus n2, which is half. Okay, तो half यहाँ पे डाल देंगे, divided by gamma minus 1. Gamma is to be found out, and that is going to be equal to 4 upon gamma 1 minus 1. Gamma 1 कितना है? देखो 5 by 3, that should be minus 1, plus again here it is n2, which is going to be 1 by 2, and that is to be divided by gamma 2 minus 1, where gamma 2 is nothing but 7 by 5. See there. So this is 7 by 5 and minus 1. Okay, so just simplify this further so that we get
yes, 4 plus half कितना होता है? It's 9/2, right? So this is 9/2 upon gamma minus 1, which is going to be equal to 4 upon 5/3 minus 1. How much it is? 4 upon 5/3 minus 1 मतलब 5 minus 3/3 मतलब 2/3, right? This is 2/3 plus here it is 1/2 upon 7/5 minus 1 मतलब ये 2/5. So 1/2 divided by 2/5. Correct है? Okay. So just solve this further and get this as 9/2. नहीं तो उसको 4.5 लिख देंगे, क्या फर्क पड़ता है? This is 4.5 upon gamma minus 1, which is going to be, here it will be 12/2 मतलब ये 6, and here it is going to be 5/4. Okay, so 5/4. Just solve this further and get it as 4.5 upon gamma minus 1 is equal to 5/4 मतलब 1.25, करेक्ट है? So 1.25 plus 6 कितना होता है? 7.25. So it's going to be 7.25. And if we just shuffle the terms, then we get this gamma minus 1 is equal to 4.5 upon 7.25. So that gamma becomes equal to 1 plus 4.5 upon 7.25. नहीं तो ऐसा करें, रखो उसको फ्रैक्शन में, डेसिमल में कन्वर्ट मत करो. Okay, 4.5 minus gamma minus upon gamma minus 1, and just take the LCM here. 4 6 are 24. 24 plus 5, 29, right? So this is 29 upon 4. Yes. And if you cross multiply it here, then we get this 4.5 into 4 upon 29, which is going to be equal to gamma minus 1. So that gamma minus 1 happens to be 4.5 into 4 कितना होता है? 4.5 का डबल होता है 9 और 9 का डबल होता है 18. So it's going to be 18/29, and hence gamma becomes equal to 1 plus 18/29, which actually becomes 29 plus 18 upon 29. That means it is going to be yes 47 upon 29. Check. This is the value of gamma of the mixture, 47/29. Okay, we can just find out this 47/29 in decimals. How can we? Okay, just find out 45/30 at least. It's approximately same as that. So it will be actually, चलो ठीक, 1.5 के आसपास तो सारे ही है. $29 ones are 29 ones are point, and 47 में से 29 गया तो कितना बचता है? 18 बचता है. 18 पे 0 दिया तो 180 बन गया. अभी कितना आएगा? 29 के टेबल में 180 तो है नहीं, बट 6 पे जाएगा. 6 तो जाएगा ही जाएगा. चलो, तो वो बनेगा एक्चुअली 174, मतलब 6 बचा, 60 हो गया. तो 60 होने से अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा यहाँ पे. 1.62 should be the correct answer. ओके, तो देखो हमने गैमा मिक्सचर का एडिबेटिक कांस्टेंट निकाल के दिखाया, जबकि हमको दोनों इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का एडिबेटिक कांस्टेंट पता था. बराबर. ओके, बट रिमेंबर वन थिंग दैट see here from the question, in the question gamma 1 and gamma 2 was not given clearly, right? gamma 1 और gamma 2 यहाँ पे उन्होंने दिया नहीं था, लेकिन फिर भी हमने हेलियम को मोनोएटॉमिक समझ के और ऑक्सीजन को डायटॉमिक समझ के gamma 1 का वैल्यू 5/3 लिया और ऑक्सीजन का जो gamma 2 का जो वैल्यू है वो 7/5 लिया. That is the main thing to understand here.
बट वन मोर थिंग इज दैट अगर हमको रेशियो ऑफ सीपी टू सीवी निकालना है तो अभी चलो ठीक है, रेशियो ऑफ सीपी अपॉन सीवी itself इज कॉल्ड एज गैमा, मतलब हमको गैमा ही निकालना है, नो डाउट. बट अल्टरनेटिवली वी कैन आल्सो फाइंड आउट सीपी सेपरेटली एंड सीवी सेपरेटली एंड देन टेक द रेशियो इंडिविजुअली, फिर भी हमको सेम ही आंसर मिलेगा. चेक करके देखो. सी हियर, इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट सीवी एंड सीपी ऑफ द मिक्सचर, ये पता है तुमको सीपी का वैल्यू कितना होता है मिक्सचर के लिए, सीवी का वैल्यू कितना होता है मिक्सचर का, कल ही हमने देखा था. देखो ठीक से, CV इज इक्वल टू N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2, करेक्ट है. और CP का भी वैल्यू का हमने वही फॉर्मूला देखा था, सेम वही फॉर्मूला CP के लिए भी बनता है, जो रहता है N1 इंटू CP1 प्लस N2 इंटू CP2 divided by N1 plus N2, so that here CV of mixture can be found out easily because we know all these things. What is N1 here? See here, we are already found out 16 gram of helium, matlab 16 by 4, it becomes 4 into CV1. What is the CV of helium? Monatomic gas का specific at constant volume कितना होता है? It's 3 by 2 R, याद करो 3 by 2 R. And N2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 16 gram oxygen मतलब half mole, right? So it's half mole and that is to be multiplied by CV2. What is the specific constant volume of a diatomic gas molecule? It's 5 by 2 R, right? So this is 5 by 2 R. Okay. And that is to be divided by N1 plus N2, which is 4 plus half again. So that we can just simplify this further and get R common from this whole thing. So as to get it as 4, अच्छा ये cancel हो जाएगा, नहीं तो रखो वैसे ही 12 by 2 bracket में plus here it is 5 by 4, right? So here it is 5 by 4 into R and that is to be divided by 9 by 2, we can see. And if we just simplify this still further by taking LCM here, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको 2 से multiply divide करो तो 12 2s are 24, 24 plus 5 it comes out to be 29 divided by 4, right? And that is to be divided by, अच्छा into R भी तो है, और 9 by 2 का value as it is, so this is 9 by 2 here. So if we just multiply this 9 by 2 by taking reciprocal of that, then we are going to get this as 29 by 4 multiplied by 2 by 9 into R, which has to be 2 1s are 2 2s are, and hence we are going to get this as 29 by 18 R, correct hai? Yes. Then we can go for CP. What is CP here? CP is also can be found out by using this same formula here. N1 is going to be 4. And what is CP for the mixture? Sorry, CP1 for the monatomic gas molecule? It's going to be 5 by 2 R. Don't forget these values. 5 by 2 R. Okay. Plus N2 is again half. And what is CP value for diatomic gas molecule? It's 7 by 2 R. Okay. Which is to be divided by N1 plus N2, where N1 is going to be 4 and N2 is half. So that we can get this CP is equal to, अच्छा इसमें भी R कॉमन ले लो तो अंदर में क्या बचेगा देखो, तो it's going to be 20 by 2 plus here it is 7 by 4, right? 7 by 4 and that is multiplied by R as it is, and here in the denominator 4 plus half comes out to be 9 by 2 as usual. Okay, so CP becomes actually, yes, what is the sum of this, इसको भी multiply divide करो 2 से, तो 20 2s are 40 and 2 2s are 4, तो 40 by 4 हो गया ना ये, so 40 by 4 plus 7 by 4 comes out to be 47 by 4, right? So this is 47 by 4 and that is to be multiplied with this 9 by 2 reciprocal, which is going to be 2 by 9, and that is obviously multiplied by R as it is, so that this 2 gets cancelled with this 4 leaving behind 2 here, and we'll be left with CP is equal to 47 by 18 into R. And finally we are in a position now to find out this gamma of mixture, which is going to be
Cp of mixture upon Cv of mixture, which are going to be 47 by 18 R divided by 29 by 18 R. So that is R gets cancelled, 18 gets cancelled, and we'll be left with 48 upon 29. The same number once again, which we have got in the last method. अभी जो पहले मेथड किया था हमने, उसके अंदर जो नंबर हमको मिला था 48 by 29, सेम नंबर हमको यहाँ पे भी मिल रहा है बिल्कुल, ठीक है, which has to be, if we reduce it up to decimals, then it reduces into 1.62 once again, and that is going to be the correct answer. Okay. सर वो 47 by 18 था. अच्छा हाँ सॉरी 47 by 18, 29 कहाँ से आया, नहीं 20, अच्छा हाँ 47 by 18 and 29 by 18, 18 कैंसिल हो गया, 47 by 29 आएगा, करेक्ट, ठीक है, चलो ठीक है. सो लेट अस स्टॉप हियर. ये क्वेश्चन तो ओरली सॉल्व कर सकते हो तुम. स्मॉल सीपी माइनस स्मॉल सीवी कितना आएगा, तो स्मॉल सीपी माइनस स्मॉल सीवी के लिए हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है कि आर अपॉन एम, एम नॉट बराबर है आर अपॉन एम नॉट. सो दिस आर अपॉन एम. अच्छा, और वो अगर मैकेनिकल यूनिट्स में एक्सप्रेस किए हुए हैं, बट आर कौन सी यूनिट में एक्सप्रेस किया हुआ है वो पता ही दिया नहीं है, तो इट कैन बी आर अपॉन एम ऑल्सो और आर अपॉन एम जे ऑल्सो. जे मतलब मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, विच इज कैलोरी और जूल के बीच में जो कन्वर्जन होता है ना, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल. तो इस 4.2 को एक्चुअली जे बोलते हैं, इसको मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बोलते हैं. इट इज डिनोटेड बाय जे एक्चुअली. तो इसको डिवाइड करना पड़ता है हमको, इससे डिवाइड करना पड़ता है. अगर आर कैलोरी में दिया हुआ है, कैलोरी वाले यूनिट्स में, तो उसको मैकेनिकल यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए उसको जे से डिवाइड करना पड़ेगा. तो इन दैट केस विल गेट दिस आंसर एज अ करेक्ट वन. डी आंसर विल बी करेक्ट वन. But if the R is given in mechanical units only, then no need to divide by J, and we'll get this R upon M answer as a final. But question may, it has to be clear that whether R is in mechanical units or it is in thermal units. Thermal units बोलते हैं उसको. चलो ठीक है. So let us stop here. So हमने कल जो concepts देखे थे उसी के ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स ये MCQs सॉल्व किए. Okay, so next time हम और अलग कंसेप्ट देखेंगे थर्मो मतलब जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर के आगे के रेडिएशन के बारे में, और उसके ऊपर के एमसीक्यूज भी उसके बाद सॉल्व करेंगे. ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय.